শাশ্বত পুৰাণক সমকালীন প্ৰাসংগিকতাৰ সৈতে একত্ৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। জীৱনৰ সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি নিজৰ অবিচল স্পৃহা আৰু দৃঢ়তাৰে নতুন দিল্লীত তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল ডান্সেছৰ জৰিয়তে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ হাজাৰ হাজাৰ শিল্পীক তেখেতে প্ৰেৰণা যোগাই আহিছে। ডক্টৰ সোণাল মানসিং ডাঙৰীয়ানীয়ে নিজৰ অনবদ্য সৃষ্টিশীলতাৰে নৃত্যক সাহিত্য ভাস্কৰ্য আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ সৈতে সংপুষ্ট কৰি এক সমন্বিত শিল্পকলাত পৰিণত কৰিছে। এনে এগৰাকী যশস্বী শিল্পীক 2023 বৰ্ষৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ পাই অসমবাসী সঁচাকৈয়ে गौरवान्वित। भारतवर्ष के द्वितीय सर्वोच्च असामरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्यांगना विदुषी लेखिका और पूर्व राज्यसभा की सांसद डॉक्टर सोनाल मानसिंह भारतीय नारी शक्ति की एक कालजयी प्रतीक है। उनका विलक्षण जीवन, मानसिक दृढ़ता, रचनात्मक प्रतिभा और नृत्य के प्रति गहन साधना ने दशकों से भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को समृद्ध किया है। उनकी विरासत आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। भारतनाट्यम और ओडिसी जैसे नृत्य रूप की माध्यम से डॉक्टर मानसिंह ने नृत्य को महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और पर्यावरण चेतना से एक सशक्त माध्यम में परिवर्तित किया है। द्रौपदी, मुक्ति, मानवता और मेरा भारत जैसे उनकी प्रसिद्ध प्रस्तुतियाँ भारतीय पौराणिक कथाओं को आधुनिक सामाजिक सरोकारों से जोड़ती है, जिससे प्राचीन कथाएं आज के युग में भी अत्यंत प्रासंगिक बन जाती है। सभी प्रतिकूलताओं को दृढ़ निश्चय से चुनौती देते हुए नई दिल्ली में सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस की स्थापना कर उन्होंने हजारों कलाकारों को प्रशिक्षित और प्रेरित किया है। डॉक्टर मानसिंह ने अपनी विलक्षण दृष्टि और रचनात्मक के माध्यम से नृत्य को साहित्य, मूर्तिकला और आध्यात्मिकता से जोड़ा है, जिससे यह एक समग्र और रूपांतरकारी कला रूप बन गया है। ऐसे एक अद्वितीय और प्रेरणादायी कलाकारों को वर्ष 2023 का श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार प्रदान करते हुए आसामवासी के लिए गौरव और सम्मान की बात है। ख्ৰীষ্টীয় ষষ্ঠ শতিকাৰ পৰা নৱম শতিকালৈ আমাৰ দেশত ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক সংস্কাৰৰ উদ্দেশ্যে ভক্তি আন্দোলনৰ মাধ্যমেৰে এক যুগান্তৰকাৰী আলোড়নৰ সূত্ৰপাত হৈছিল। ভক্তিবাদৰ মাধ্যমেৰে মহান বৈষ্ণৱ গুৰুসকলে মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ সম্পন্ন গণতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ অহো পুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। শংকৰাচাৰ্যৰ অদ্বৈত ব্ৰহ্মৰ উপাসনা কৰা আৰু প্ৰকৃত জ্ঞান অৰ্জনৰ মুখ্য প্ৰাপ্তিৰ কথা উল্লেখ কৰি এই ধৰ্মীয় আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল। শংকৰাচাৰ্যৰ মধ্যযুগৰ এই ভক্তি আন্দোলনক দক্ষিণ ভাৰতত ৰামানুজাচাৰ্যই আৰু উত্তৰ ভাৰতত ৰামানন্দই নৱ ৰূপত ৰূপায়ণ কৰিছিল। উত্তৰ ভাৰতত তুলসী দাস, মহাৰাষ্ট্ৰত ৰামদাস তুকাৰাম আদিয়ে ভক্তিৰ গীত প্ৰচাৰ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে পঞ্জাৱত গুৰু নানক আৰু বংগত শ্ৰী চৈতন্যই ভক্তি আন্দোলনৰ গুৰি বঠা ধৰিছিল। এনে এক যুগ সন্ধিত আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।